एंड वन बाय वन मैं ट्राई करती गई और मुझे सभी कुछ सूट किया एंड सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। तो आई टोटली स्विच टू दिस बॉडी शॉप रेंज, टी ट्री रेंज। एंड अभी मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स इसी रेंज के हैं स्किन केयर से रिलेटेड। Everyone, this is Shupra. Welcome to my channel. Hope you all are doing great and staying safe at home. Today I'm going to take you through my long due order which I just got today from the Body Shop. So as you know, lockdown में कितना tough हो गया था, so बहुत टाइम से due था and finally I got it today. So I just thought कि ये मैं आपके साथ share करूँगी the unboxing of my Body Shop products. So this is the box I received which has this Body Shop label on it. So let me just take you through it. अनबॉक्सिंग हो गई है, तो अब वन बाय वन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस बॉडी शॉप टी ट्री फेशियल वॉश। दिस इज द फेस वॉश आई यूज एंड इट्स वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग and very effective if you have a oily skin and if you have a acne problem. So it's like बहुत बढ़िया है, आपको ट्राई करना चाहिए। इसके साथ मैंने मंगवाया है, I just opened the packet, I'll just show you. So this is the one, Body Shop Tea Tree Anti-Imperfection Daily Solution. It's like a serum, it's like water based and very lightweight, and it just absorbs in your skin like instantly. So मैं यही यूज़ करती हूँ। I don't apply moisturizer or anything. मैं simply यही अप्लाई करती हूँ रात को, and डे टाइम में I apply Body Shop Mattifying Lotion which is here. So first I apply this after face wash and then I apply this lotion. So ये एक साथ बहुत अच्छा काम करते हैं guys, and it's very effective. And if you have like a skin which I'm telling you, like acne prone skin and oily skin, you should definitely try this range. It's very effective guys, and I'm sure you're gonna like it. This is it. This is what I ordered, these 3 products. प्लस इसके साथ मुझे कुछ फ्री सैम्पल्स मिले हैं कि स्कीम के अंडर। सो ये मैंने 2 फ्री सैम्पल्स मंगवाए हैं। तो आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस ब्रिटिश रोज फेस मास्क, तो मैंने इसका सैम्पल मंगवाया है। आई एम गोना ट्राई इट, और अगर मुझे ये ठीक लगा तो आई एम गोना बाय इट नेक्स्ट टाइम। प्लस इसके बाद मैंने ड्रॉप्स ऑफ यूथ का एक सीरम मंगवाया है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर माई हस्बैंड। तो मैं उनको ये ट्राई करने को दूँगी बिकॉज मैं तो ये सोल्यूशन यूज़ करती हूँ, इट जस्ट गोज़ विद माई स्किन, तो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। बट ये मैं अपने हस्बैंड को ट्राई करवाऊँगी, एंड इफ इट सूट्स हिम तो ये भी मैं नेक्स्ट अपनी परचेज में ज़रूर इंक्लूड करने वाली हूँ। सो गाइस, प्रोडक्ट डिटेल्स तो हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग बॉडी शॉप प्रोडक्ट्स। लाइक एक चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड वन बाय वन आई स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द सिमिलर रेंज, ऑफ द सेम रेंज विच वॉज टी ट्री। एंड वन बाय वन मैं ट्राई करती गई और मुझे सभी कुछ सूट किया एंड सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। तो आई टोटली स्विच टू दिस बॉडी शॉप रेंज, टी ट्री रेंज। एंड अभी मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स इसी रेंज के हैं स्किन केयर से रिलेटेड। सो कब से मैंने स्टार्ट किया, इट्स अराउंड लाइक 3 or 4 years बैक आई बॉट BB क्रीम। तो आई हैड दैट पिम्पल एंड एक्ने प्रोन स्किन, and I was actually using some other brands products for the skin care purpose and effective नहीं था। So बस थोड़ा बहुत हैंडल हो जाता था, तो उसको मैंने ठीक करने के लिए, because to hide the blemishes I was looking for a BB kind of
BB cream kind of thing which actually hides the imperfections and blemishes on the skin. कोई और BB cream में लगा देती तो that actually clogged my pores और फिर situation और worse हो जाता था. तो इसलिए मैंने बॉडी शॉप का BB क्रीम ट्राई किया एंड इट वॉज क्वाइट गुड बिकॉज वो टी ट्री रेंज का ही था, सो इट वॉज क्वाइट इफेक्टिव. बाद आई ट्राइड बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल विच आई हैव, मेरे पास ऑलरेडी है, वो छोटी सी बॉटल में आता है. एंड धीरे धीरे करके जब मुझे 2-3 चीज़ें सूट करने लगी तो आई थॉट कि 1 by 1 और चीज़ें भी ट्राई करते हैं. बिकॉज यू नो हम जब कोई ब्रांड, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो वी आर वेरी स्केयर्ड टू स्विच टू अनदर वन until वी आर वेरी वेरी श्योर, राइट. सो इन प्रॉब्लम स्किल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं एंड इट्स वर्किंग वेरी वेरी वेल एंड आई डोंट थिंक अब मुझे स्विच करने की ज़रूरत है. आई यूज टू इन्वेस्ट इन लाइक मैनी प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन एंड दिस एंड दैट एंड कुछ भी परफेक्टली काम नहीं करता था. बट अभी मैं सिर्फ टी ट्री का ये बॉडी शॉप का टी ट्री रेंज यूज़ कर रही हूँ. इसके सो समवट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ऑल टुगेदर मिला के वही बन जाता है जो मैं 10 प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती थी और मुझे 3-4 चीज़ों में मुझे मेरा पैकेज फुल हो जाता है. तो मुझे अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग भी ये ट्राई करें. इट्स वेरी वेरी गुड गाइस. इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इस ब्रांड को बहुत ही स्पेशल बनाती है. इट्स लाइक इको फ्रेंडली, नेचुरल एंड क्रुएल्टी फ्री. सो ये सारी चीज़ें जो भी हैं इसको, इस ब्रांड को सारे ब्रांड से हट के बनाती हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ प्लस. एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी है बिकॉज they are eco-friendly and they are like very concerned about the environment, which is like you can use the product and instead of throwing away the plastic bottles that you have used, you can actually give it back to the store and they use it, they recycle it and they use it again. So it's very environmental friendly. This is one thing that makes the brand more attractive. So guys, I think you like the video and ये 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी और इनका रिव्यू मैं यूज़ करने के बाद ही दे पाऊँगी कैसा है. अपार्ट फ्रॉम दैट टी ट्री तो मैं आपको बता चुकी हूँ बेस्टेस्ट ऑफ ऑल है इफ़ यू हैव प्रॉब्लम स्किन लाइक मी. सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अब मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए बिकॉज मैं बहुत टाइम से इनके लिए वेट कर रही थी. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.